Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about two news articles. So, first one, we'll explore how three scientists won the Nobel Prize for creating a device that proves quantum tunneling. Okay. Now, this sounds a bit like something totally out of science fiction, but don't worry, we'll understand it step by step. Okay. And then we'll look up at the sky and learn what makes a supermoon appear so big and bright. Okay, so let's start with the first news article. Now, students, imagine one thing. Uh, you need to imagine like you are in a science fiction movie and everything around you is breaking down. Your pencil, desk, even your body into smaller and smaller pieces. Now, what will happen? You will finally, you would reach atoms, okay, even smaller particles like electrons and protons. Now this is what, this is the quantum world where basically rules of ordinary physics stop working. Okay, now in our normal world, what happens if a ball bounces, when it hits the ground, it bounces, right? But in the quantum world, particles can do strange things like tunneling through walls. Okay, and that's what this year's Nobel Prize in physics is all about. So we have three scientists: John Clark, Michel H. Devrot, and John M. Martinez. They won the Nobel Prize for showing how entire electrical circuits can behave according to quantum mechanical laws. So let's imagine this. Suppose you have a cricket ball, okay? So when you throw it in the ground, it bounces back, right? But in the quantum world, that ball or particle, it might just pass through the ground as if it's a ghost. So that is what quantum tunneling is. ओके, तो जैसे अगर आप बॉल फेंकते हो क्या होता है, वो बाउंस करता है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में क्या होगा, जो वो बॉल है अगर उसको ग्राउंड पे हिट करेंगे तो वो ग्राउंड से पास थ्रू हो जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। ओके, एंड साइंटिस्ट बिल्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ सर्किट यूजिंग मटेरियल्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, सुपर कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जहां से इलेक्ट्रिसिटी और हीट इट कैन पास विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ओके, सो दीज आर बेसिकली सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। थोड़ा भी उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, नो हीट, नो एनर्जी लॉस, जस्ट स्मूथ फ्लो between these conductors. What happens, they place like this is the superconductor, they place a thin non-conducting layer. Okay, so between two superconductors, what they do, they place a non-conducting layer. This setup is known as Josephson junction, and through this they could actually see and measure quantum tunneling. ठीक है, कि एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है इस पूरे सर्किट में, इस सेटअप से वो पता लगा लेते हैं। Okay, now you might wonder, why does all this matter? Students, this tiny quantum effect, it helps us build technologies of the future. ठीक है, तो जो साइंटिस्ट का ये काम है, it forms the base for superconducting qubits. Qubits basically जैसे हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर्स है वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स कहते हैं। ओके, सो क्वांटम कंप्यूटर्स कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स इन सेकेंड्स, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। जैसे कोई एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर होता है, वो इट दैट computer will take thousands of years, but for a quantum computer it can solve it in within seconds. So their findings are quite helpful,
and it also help in creating ultra sensitive quantum sensors. ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ जाओ कि बहुत जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से काफ़ी सारी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो what these scientists proved is that we can now make entire circuits behave in ways that were once thought possible only for single particles. So it's like bringing the magic of microscopic world into uh, our world into human sized technology. ठीक है, तो अब आइडिया ऑफ टनलिंग क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप किसी एक सॉलिड वॉल के सामने खड़े हो, ठीक है, अपने घर के आपके सामने सॉलिड वॉल है, नाउ नॉर्मली यू कांट गो थ्रू इट, बट क्वांटम पार्टिकल्स समटाइम्स डू, दे कैन अपीयर ऑन द साइड विदाउट ब्रेकिंग और क्लाइंबिंग ओवर द वॉल. सो इट्स लाइक टेलीपोर्टेशन, है ना, कि टेलीपोर्टेशन एक लेवल से, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर. All right. So that's why scientists were so amazed that they found a way to make a bunch of particles behave this way together. ठीक है, जिस इस सर्किट में. And this Nobel Prize reminds us that even the weirdest ideas in science, it can eventually become part of real world. Okay. Now, students, let's talk about the next news article that we have. Yes, supermoon. Students, supermoon happens when a full moon coincides with the moon's closest distance to the earth. Okay, it's called perigee. Perigee. अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि जो मून का ऑर्बिट है, व्हाट इज ऑर्बिट आपको पता है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी, जिसमें कोई भी जो मून होता है या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है जिसमें वो रिवॉल्व करती रहती है. ठीक है, तो जो मून का जो ऑर्बिट है, इट इज इन अ परफेक्ट सर्कल, इट्स मोर लाइक एन ओवल. तो समटाइम्स द मून इज क्लोजर टू अस. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अर्थ एंड this is moon, this is just a rough diagram, so sometimes moon is close to us, okay, and sometimes it is farther away by as much as 50,000 किलोमीटर. ठीक है, तो जब पास में होता है तो उसको क्या कहेंगे, पेरीजी. जब दूर दूर होगा उसको क्या कहेंगे, पूजी. So, when the full moon appears during its closest approach, it looks about 14% larger and 30% brighter than a normal full moon. So, that's what we call a supermoon. और अभी October 7, yesterday, पूरी दुनिया के लोगों ने all around the world, they saw full moon. Okay, right? Now, not full moon, super moon. Now, the word supermoon was first used in the 1970s by an astrologer named Richard Knoll. But today, astronomers and photographers use it too. So, even though size difference isn't huge, the extra brightness, okay, the extra brightness makes the moon look breathtaking, especially when it's near the horizon, right? So cultures around the world, they have connected supermoons with myths, celebration, spiritual meanings, and in many traditions, it's seen as a time of reflection, renewal, and beauty. Okay, a reminder basically of how nature's patterns influence human imagination. ठीक है, तो अब देखो, अगर जब जब ये एक इवेंट मून की वजह से जो होता है फिनोमिनन, वो क्या है, टाइडल इफेक्ट, right? So when the moon is closer, its gravity pulls harder on the oceans. So that create what scientists call perigee spring tides. And these tides are slightly higher and lower than usual. Normally, that's not a big deal. But when a storm occurs at the same time, these tides can make coastal flooding worse.
Okay, so that's why meteorologists and scientists they closely observe supermoons, and they help study tidal patterns and prepare for possible sea level changes. All right. So if you ever want to see a supermoon, the best time is right after sunset or just before sunrise. And luckily, आज मैंने भी देखा था. Okay, when it's close to the horizon, बहुत सुंदर लग रहा था. So it looks specially, golden and large due to an optical illusion. All right. So that's all for today, students. Thank you for listening. Keep questioning, keep observing, and keep exploring. Bye bye.